Hello students, uh, we have studied up till now 3 lectures of determinant. In first lecture we studied the introduction of determinant, how to find minor determinant and cofactors, determinant of cofactors. Is that clear? In first lecture. In second and third lecture we studied the properties. Those properties we will be revising here in this lecture first, and then we will continue the examples on the properties. Is that clear? So before going to continue, please subscribe the YouTube channel Maths Lily Counseling if you are not subscribed yet, so that you will get the updates in future. Is that clear? And that will be creating as a motivation for me to create the good lectures in future, right? So first property, what we have studied in the first property? The first property was the value of determinant remains same if rows and columns of the determinant are interchanged. Okay, so अगर rows और column अगर interchange करते हैं हम, is that clear? So that is, then the second property we studied, if any two rows of a determinant or two columns of a determinant are interchanged. Are interchanged means what? What you will get? Look at here. Is that clear? So what you will get? Look at here. Suppose R1 interchange with R2 or C1 interchange with C2, etc. Then value of determinant is what changes by sign. Is that clear? So this was property 2. In property 1 is what? In property 1, if we write the matrix A, B, C, D, sorry, determinant. If we write a determinant and if we change rows into columns, तो पहला रो A, B था, so column हो गया पहला, और second row C, D है तो second हो गया. The value remains same. Okay, value same. Is that clear? And the third property was, if two rows of a determinant are equal, then value of determinant is 0. For example, A equals to, एक determinant लिखते हैं हम, A, B, C, right? A, E, F, okay? D, is that clear? Then what you will get? Here is a B, here is a D, right? And then what? C, C. Okay. Now in this determinant, C2 is equal to C3, and therefore determinant value is equal to 0. Same is the case for rows. Now if all elements of a row and if in determinant R2 tends to 2 multiplied by R2, then delta will change to 2 delta. Is that clear? Similarly, C3 changes to thrice C3, right? Then also delta will changes to 3 delta. Okay, so this is the property. Then property number 5. If each element of any row contains 2 terms, okay, or column contains 2 terms, okay, then determinant can be expressed as a sum of 2 determinants. Here I am giving a simple example. Suppose A plus B, C plus D, E and F. Is that clear? So first row, every element having 2 terms, and therefore these can be written as A, E, C, F plus B, D, E, F. Is that clear?
means these two terms are separated in two different determinants. Is that clear? That is property number 5. Then property 6. If all elements below leading diagonal element or above leading diagonal element or except leading diagonal element are 0, then the value of determinant is a product of leading diagonal. Now I am writing here 3 determinants. Okay, एक determinant, देखिए एक determinant A, B, C, D, E, F and here 0, 0. दूसरा है A, B, C, D, right, E, F and here is 0, 0, 0. Okay. तीसरा है A, B, C, right. Here is 0, 0, 0, 0, 0, 0. So what? Here is what? First determinant below leading diagonal element, and therefore the value delta is equal to what? The product of leading diagonal element. Okay. यहाँ पे they 0, 0, 0 means above the leading diagonal element. All elements above the leading diagonal element are 0, and therefore delta is equal to A into D into F. Okay. And here all elements except leading diagonal element are 0, means these are 0 below and these are above 0. Okay. Only these are non-zero, and therefore delta is equal to A, B, C. Is that clear? Then property number 7. If determinant D become 0, okay, if in delta, if x is equal to 0, then x is okay, delta is equal to 0. If x is equal to A, then x minus A is a factor. Is that clear? And then property number 8. Property number 8 is what? The determinant B obtained from A by adding to each element of its ith row k times the corresponding element of another row of A. Then determinant A is equal to determinant B. Okay, determinant B is what? Okay. So let us see A. I am writing here. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okay. And now if B हमने तैयार किया R1 tends to R1 plus 2 times R2. So what? B is a new determinant wherein R1 is changes by this formula R1 plus 2 R2. R1 every element of R1 plus twice of every element of R2. Is that clear? So then determinant A is equal to determinant B. This property is also called as elementary row transformation. Is that clear? So this is all. Now we start. This was the revision of the previous 2 lectures. Okay, property 1 to 4 and property 5 to 8. Now examples on the determinant. Let us see. First example, prove that determinant of B plus C, C B, C plus A, B A plus B is equal to 4A B C. Okay, so what we do? We start with consider left hand side. So it is equal to B plus C, C B, C plus A B, A plus B. Is that clear? Now what we do? Now let us see, we do, if we add this C and B, तो B plus C हो जाएगा, और उसको इसमें से subtract किया तो B plus C minus B plus C means what? R1 tends to R1 minus R2 plus R3. R2 plus R3 किया, उसको R1 से subtract किया, तो आपको क्या मिलेगा? You will get B plus C minus B plus C. So ये कट गए. So you will get 0, means you will get 0. And here is what? C
सी माइनस सी प्लस ए प्लस ए, सी सी कैंसिल हो गया, सो यू गेट माइनस 2a. Similarly here is also minus 2a, and here R2 as it is रहेगा, c plus a b a plus b. Is that clear? So ये हो गया. Now first row, from first row we take minus 2a common, so what will have? 0 1 1, c plus a बराबर है, b a plus b. Is that clear? Now what do? We do c2 tends to c2 minus c3. Okay, so what we have? It is equal to minus 2a into determinant 0 cb बराबर है. अब देखो c1 एज इट इज, c2 चेंज होगा c2 माइनस c3 से, तो 1 माइनस 1 0, c प्लस ए माइनस ए सी, a माइनस ए प्लस बी दैट इज माइनस बी, और ये एज इट इज रहेगा 1 a प्लस बी. ओके, नाउ वी सॉल्व दिस. अब इसको मुझे सॉल्व करना है तो क्या मिलेगा? सो इट इज इक्वल टू माइनस 2a इंटू बराबर है 1 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी 0 आएगा पहली टर्म. देखो यहाँ पे पहली टर्म 0 है तो ये 0 आ जाएगा, दूसरी टर्म भी 0 है, ये भी 0 हो जाएगा. सिर्फ तीसरे टर्म का हमको लिखना है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय c इंटू माइनस बी सी. ओके, तो यू विल गेट 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू व्हाट विल गेट? 1 into minus BC minus BC. Is that clear? So it is equal to minus 2a. Is that clear? And here minus BC minus 2BC, and that is equal to minus 2, that is plus 4 ABC, and that is equal to what? Right hand side, hence proved. Is that clear? So ये हो गया. कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया हमने यहाँ पे? C2, मतलब दिस इज प्रॉपर्टी नंबर, दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 8. यहाँ पे भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया हमने? प्रॉपर्टी 8. इज दैट क्लियर? तो डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे माइनस 2a कॉमन लिया, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया माइनस 2a कॉमन की? देखो माइनस 2a कॉमन, तो उसकी प्रॉपर्टी कौन सी है? दिस वन, प्रॉपर्टी नंबर 4. माइनस 2a कॉमन लिया हमने, तो डेट इज द प्रॉपर्टी नंबर ये प्रॉपर्टी 4. इज दैट क्लियर? सो इन दिस वे यू विल गेट. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2. In this example, EBC are all different, and if what? This determinant a square 1 plus a cube, b square 1 plus b cube, c square 1 plus c cube is equal to 0, then prove that ABC is equal to minus 1. Is that clear? So let us start with the left hand side. Left hand side is equal to a square 1 plus a square, b square 1 plus b cube, ये b cube है, a cube है, c square 1 plus c cube. Is that clear? अब हम क्या करेंगे? देखो ये जो थर्ड रो है C3 बराबर है, इसमें हर एक एलिमेंट है द सम ऑफ 2 टर्म्स बराबर है, एंड देयरफॉर ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक करेंगे प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट. पहले डिटर्मिनेंट में 1 1 1 जाएगा और दूसरे डिटर्मिनेंट में a क्यूब b क्यूब c क्यूब जाएगा, और a स्क्वायर 1 b
बी स्क्वायर 1 सी सी स्क्वायर 1 और यहाँ पे ए स्क्वायर ए क्यूब बी बी स्क्वायर बी क्यूब सी सी स्क्वायर सी क्यूब। दैट इज द प्रॉपर्टी कौन सी है? ये प्रॉपर्टी नंबर 5। Is that clear? Then you see it is equal to पहला डिटर्मिनेंट है ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर 1 प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट ये है, इसमें से R1 में से ए कॉमन निकलता है, R2 में से बी कॉमन निकलता है और R3 में से सी कॉमन निकलता है। तो ए बी सी इंटू डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर बराबर है 1 सी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये आ गया। अब व्हाट यू विल डू नाउ, C1 C2 वो हमने इंटरचेंज कर दिया, तो व्हाट विल गेट? C1 और C2 वो इंटरचेंज किया तो क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर 1 प्लस ए बी सी इंटू -1 ए बी सी 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये बाय प्रॉपर्टी नंबर 2 बराबर है। 2 रोज इंटरचेंज, 2 कॉलम इंटरचेंज किए। सिमिलरली व्हाट वी डू अगेन, वी C2 एंड C3 को इंटरचेंज करेंगे बाय अगेन प्रॉपर्टी नंबर 2 बराबर है। तो हमें क्या मिलेगा? देखो हमें मिलेगा, देखो ए इक्वल टू ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर 1 बराबर है प्लस व्हाट इज देयर ए बी सी -1 पहले से था और एक -1 आएगा, सो यू विल गेट ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर 1 बराबर है। क्योंकि यहाँ हमने क्या किया, इनको इंटरचेंज किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे आ गया 1 1 1 आखिरी में चले गए बराबर है। अब देखो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट सेम है, सो यू विल गेट डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर 1 इनटू ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये डिटर्मिनेंट कॉमन लिया हमने ये, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस वाई प्लस, क्योंकि -1 इंटू -1 प्लस होता है ए बी सी। इज दैट क्लियर? अब हमें अभी ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, सो इट इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी सी इन 2। ओके, सो व्हाट वी डू हियर, वी डू R2 tends to R2 minus R1 and R3 tends to R3 minus R1। ये दो R2 और R3, तो क्या मिलेगा आपको? देखो देन द वैल्यू ऑफ डिटर बाय प्रॉपर्टी नंबर 8। इज दैट क्लियर? तो ये मिलेगा ए स्क्वायर 1, अब क्या आएगा यहाँ पे बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, यहाँ पे सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0। इज दैट क्लियर? सो लुक एट हियर, इट इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी सी। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दिस? बी माइनस ए कॉमन। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम थर्ड रो? सी माइनस ए। बाय सी माइनस ए, क्योंकि सी स्क्वायर माइनस ए के 2 फैक्टर मिलेंगे, सी माइनस ए सी प्लस ए, इसके भी 2 फैक्टर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बी माइनस ए बी प्लस ए। तो क्या बचेगा?
ए स्क्वायर 1 तो बचेगा ही, बराबर है। बी माइनस ए कॉमन लिया हमने तो 1 बचेगा यहाँ पे। यहाँ से बी माइनस ए कॉमन लिया तो बी प्लस ए बचेगा, बराबर है। यहाँ पे सी माइनस ए कॉमन, यहाँ पे 0, बराबर है। यहाँ पे सी माइनस ए कॉमन लिया 1, सी माइनस ए कॉमन लिया तो सी प्लस ए, here is 0. And now it is equal to 1 plus ABC into B minus A into C minus A multiplied by, अब पहला एलिमेंट लेंगे हम A, तो A मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, B प्लस ए इंटू 0 माइनस 0 इंटू सी प्लस ए, मतलब 0 माइनस 0, माइनस ए स्क्वायर इंटू क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0, मतलब 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू क्या आएगा, सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए। इज दैट क्लियर? एंड we close this. Is that clear? So now it is equal to 1 plus ABC into B minus A, okay, into C minus A, ओके। B माइनस ए से माइनस साइन कॉमन लिया तो ये हो जाएगा A माइनस बी, C माइनस ए से माइनस साइन, C माइनस ए रहने देंगे तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1, ओके। और ब्रैकेट में क्या आएगा, आप देखो ब्रैकेट में क्या आएगा, C प्लस ए माइनस बी प्लस ए, तो ए माइनस ए कैंसिल हो गया, ए माइनस ए कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज लेफ्ट, C माइनस बी, C माइनस बी, ओके। सो इट इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी सी, ए के माइनस साइन है, C माइनस बी को अगर B माइनस सी कर दिया तो फिर से माइनस 1, तो ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, माइनस 1 पहले से था और एक माइनस 1 आ गया, एंड सो इट इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, बट ए not equal to B, not equal to C, given that A, B, C are different, and therefore A minus B, B minus C, and C minus A all not equal to 0, and hence this is equal to 0 only if 1 plus A, B, C is equal to 0. ये ब्रैकेट ऐसा है, okay, and that is, this implies that A, B, C is equal to minus 1. Hence, proof. Is that clear? So this was the example. Now, next example. Example number 3. Now look at here. Without expanding as far as possible, prove that determinant of 1, 1, 1, x, y, z, x cube, y cube, z cube is equal to x minus y, y minus z, z minus x into x plus y plus z. Okay, so again we start with consider left hand side. Is it? So what is left hand side? Determinant 1, 1, 1, x, y, z, x cube, y cube, z cube. Is it okay? Now what we do? C2 tends to C2 minus C1. C3 tends to C3 minus C1. Is that clear? So what we have? It is equal to C1 as it is रहेगा 1x x cube, और C2 minus C1 1 minus 1 0. Here y minus x, here y cube minus x cube. Is that clear? Here 1 minus 1 0. Z minus x, z cube minus x cube. Is that clear? Okay. Now you tell me it is equal to 1x x cube 0 y minus x, और ये होगा y minus x into
y square plus xy plus x square. तीसरा कॉलम z0 z माइनस एक्स और ये आएगा z माइनस एक्स जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब के फैक्टर z माइनस एक्स इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर. अब देखिए सेकंड कॉलम में से y माइनस एक्स कॉमन निकलता है. थर्ड कॉलम में से z माइनस एक्स कॉमन निकलता है. सो व्हाट यू विल गेट, you will get here it is equal to y minus x common from second column, z minus x common from third column. So what we have? We have 1x x cube 0 1 बराबर है और यहाँ पे क्या क्या y minus x था ना, तो you will get y square plus xy plus x square. Here is 0 1 z square plus xz plus x square. And now we solve this. So it is equal to y minus x into z minus x into 1 multiplied by determinant of 1 1 y square plus xy plus x square z square plus xz plus x square. 1 multiplied by this determinant और बाकी क्या आएगा -0 plus 0. So is that clear? So it is equal to y minus x into z minus x into, देखिए क्या आएगा z square plus xz plus x square 1 into this minus 1 into this, तो minus y square minus xy minus x square बराबर है. x square माइनस एक्स और कैंसिल हो गया. सो इट इज इक्वल टू y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स. अब क्या बचेगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बराबर है एक्स जेड माइनस एक्स वाई, एक्स कॉमन निकलता है तो जेड माइनस वाई बराबर है. सो इट इज इक्वल टू y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स. यहाँ से जेड माइनस दिस कैन बी फैक्टोराइज एज जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई और यहाँ पे जेड माइनस वाई, इसलिए जेड माइनस वाई एक ब्रैकेट कॉमन निकल जाएगा. तो विल गेट जेड प्लस वाई प्लस एक्स बराबर है. एंड सो इट इज इक्वल टू व्हाट वी हैव, इट इज इक्वल टू, सो कैन वी राइट एक्स माइनस वाई into y minus z into z minus x into x plus y plus z. x माइनस वाई यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, z माइनस वाई यहाँ से वो माइनस कॉमन निकाला तो y माइनस जेड होगा, ये वो x माइनस वाई होगा. दोनों जगह से माइनस माइनस कॉमन निकाला था प्लस, इसलिए साइन एज इट इज रहेगा प्लस. ओके एंड सो बराबर है एंड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस. Is that clear? So dear students, if you like this lecture, please subscribe the YouTube channel Maths Clinic Counseling Center by pressing a bell button. Is that clear? Like it, share it to the students who are in need. Thank you very much.